दोस्तों आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा जॉन्डिस पे। तो जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज इक्ट्रस। अब इट्स अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लीवर डिजीज एंड बिलियरी सिस्टम। मतलब जॉन्डिस क्या है? ये हमारा जब एक्सेसिव लेवल ऑफ बिलिरुबिन हमारा प्लाज्मा में जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिलिरुबिन का लेवल, तो एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। इट्स अ डिजीज ऑफ लीवर एंड बिलियरी सिस्टम का एक डिजीज है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन लीडिंग टू येलोइश डिस्कलरेशंस ऑफ प्लाज्मा एंड विजिबल म्यूकस मेम्ब्रेन। मतलब जितने भी हम प्लाज्मा में, जैसे हम लोग जब ब्लड कलेक्शन करेंगे तो उसके बाद जो उसका प्लाज्मा होता है उसमें येलोइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, एज वेल एज द विजिबल म्यूकस मेम्ब्रेन लाइक कंजक्टाइवल म्यूकस मेम्ब्रेन, वल्वार म्यूकस मेम्ब्रेन, gums, underside of the thigh, they are also turn yellowish. Now there is a three types of jaundice. First is hemolytic jaundice, and second is hepatobiliary, hepatocellular jaundice, and obstructive jaundice. There is a three type of jaundice. In hemolytic jaundice means there is a hemolysis of the blood. अब hemolysis अलग अलग कंडीशंस में होते हैं, जैसे कि इन द केस ऑफ हीमोप्रोटोजोल डिजीजेस लाइक बबेसियोसिस, ट्रिप्नोसोमियोसिस, अर्लिचियोसिस. So this also called as prehepatic jaundice. Prehepatic means before entering into the liver, before entering into the hepatic system, that is prehepatic jaundice. Or hemolytic jaundice or overproduction jaundice means whenever there is a pathway where there is a production of this bilirubin. So when those RBCs they complete their lifespan, they are destroy in the spleen, and when they destroy in spleen there is a component called bilirubin is produced. So when there is a excessive destruction of this RBCs, overproduction of the bilirubin, therefore their name is overproduction jaundice or prehepatic jaundice or hemolytic jaundice. In certain disease conditions like hemoprotozoal disease, some organic or inorganic toxins also destroy these RBCs, plant toxins, viral or bacterial toxins. This also leads to hemolytic jaundice, overproduction jaundice, or prehepatic jaundice. Now, hemoprotozoal disease like babesiosis, leptospirosis, anaplasmosis, chronic copper poisoning, selenium toxicities, infectious anemia, and bacillary hemoglobinuria, also called as caused by Clostridium hemolyticum, that is bacillary hemoglobinuria, red water disease. Yeah, excessive ingestions of berseem. Berseem is a plant which is rich in protein sources. Also, over excessive ingestion also causes hemolytic jaundice. So, majorly it is a hemoprotozoal disease like babesiosis, leptospirosis, and anaplasmosis, and bacillary hemoglobinuria. In equine, it's certain called as infectious anemia, equine infectious anemia. This also called as hemolytic jaundice or prehepatic jaundice. Now, second is hepatocellular jaundice. Hepatocellular jaundice or intrahepatic jaundice, in which there is a damage to the hepatic lobules. Hepatocyte cells, they are damaged in hepatocellular jaundice. Occur to damage of the hepatocytes by infections or toxic agents. Also because of deficiency of vitamin E or selenium can result into this hepatocellular jaundice. Now, third type of jaundice. So first jaundice is hemolytic jaundice, second is hepatocellular jaundice, and third is obstructive jaundice or post-hepatic. There is a prehepatic, this is a intrahepatic, and now there is a post-hepatic jaundice, means there is an obstruction of the biliary ducts. So also called as obstructive jaundice or post-hepatic jaundice, occur as a result of obstruction of the bile ducts. Biliary calculi, some certain types of stones in the biliary bile canaculus. Infections with trematodes are common cause of bile duct. Trematode infestation like Fasciola hepatica, giganticus, Fasciola hepatica majorly. This causes bile duct obstruction. So there is a three types of jaundice: hemolytic jaundice, hepatocellular jaundice, and obstructive or post-hepatic jaundice. Now, what are the pathogenesis of this type of jaundice? In hemolytic jaundice, because of excessive ruptures of the RBCs or erythrocytes, more hemoglobins are produced and more bilirubins are produced, and these bilirubins are conjugated. Now, more conjugation in liver, this नॉर्मली व्हाट हैपन्स, क्या होता है कि जो ये बिलिरुबिन होता है वो लीवर में जाता है और लीवर में जाके ये कंजुगेट होता है, और ये जो कंजुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिनरी सिस्टम के थ्रू. ठीक है.
अब जब ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा तो ज़्यादा लीवर उसको कंजुगेट करेगा, और जब ज़्यादा एक लीवर का एक थ्रेशोल्ड होता है उसके बाद वो बिलिरुबिन को कंजुगेट नहीं करेगा, तो जब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का एक्स्ट्रा लेवल हो जाएगा वो वापस से फिर ब्लड से होता हुआ प्लाज्मा में आएगा. व्हेन लिवर थ्रेशोल्ड क्रॉसेस इट कैन नॉट कंजुगेट एक्स्ट्रा बिलिरुबिन, सो दिस अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन्स का लेवल आपको प्लाज्मा में ब्लड में बढ़ता हुआ नजर आएगा. सो दैट इज द केस ऑफ हिमोलाइटिक जॉन्डिस और प्री हिपेटिक जॉन्डिस इन विच देर इज अ इंक्रीज लेवल ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन. Okay. Now in hepatocellular jaundice or intrahepatic jaundice, the capacity of the hepatocytes to conjugate the free bilirubin is reduced.